गुड मॉर्निंग। अवानी चित्रा है। अवानी चित्रा नहीं है। अवानी चित्रा नहीं है इसमें। चित्रा नहीं है। ऋतिक राज। ऋतिक राज। ऋतिक राज है। चलो ऋतिक यस सर। और अवानी चित्रा है। देखो तो। ओके सर। नहीं है। अवानी चित्रा नो सर नहीं है। नहीं है। पहले वो मॉनिटर रहा करती थी। हैं? नो सर। तब सर और कजर हर्षित मॉनिटर हुआ करते थे। आए क्या बोला? सर और कजर और हर्षित मॉनिटर हुआ करते थे। अर्थ जा। और कजर एंड हर्षित। ऋतिक राज तुमको मैं प्रीफेक्ट बना दिया है। आर यू एग्री विद दिस? क्या आर यू सर? एग्री? हैं? 6 सर भी आप तो क्या हो बोल ना। रहे हैं? 6 यस सर। तो तुमको मैंने प्रीफेक्ट बना दिया है। आर यू ओके एग्री? सर। हैं? यस सर। यस सर। तुम इसको फुलफिल करते हो। यू डिजर्व करते हो इसको। यस सर। प्रीफेक्ट बनना चाहते हो। यस सर। ओके। और अवानी चित्रा जब भी ज्वाइन करे। अवानी चित्रा अभी तक नहीं ज्वाइन की है। और अर्जा ज्वाइन कर ली है। अर्जा नहीं ज्वाइन की है। ओके। तो देखो कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ऋतिक राज यस सर। कहाँ तक डिस्कस हो गया? सर डू यू नो तक 108 के। हैं? यस सर। सर पेज नंबर 108 के डू यू नो तक। टॉपिक बताओ। टॉपिक नॉट लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आपको लर्न करना यस है सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंस लिविंग। बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। यस, तो याद हो गया। चलो जी तुम ही बताओ कॉस्ट्यूम व्हाट इज द डिफरेंस। यस सर। चलो बुक को आगे रखो, डिस्प्ले करो कि हमने बुक नहीं देख रहा हूँ। यस सर। दिखाओ, बुक को आगे दिखाओ और जवाब दो। मिस्टर कॉस्ट्यूम साइलेंट। यस सर। बोलो। एट कहाँ से आवाज आ रहा है? अभिज्ञान सिन्हा, आर यू लिस्टिंग? Yes, sir. बोलो व्हाट इज द डिफरेंस Yes, sir. बिटवीन A network, sir. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स?
तो मैं बताऊं? बोलो ऋतिक राज बोलो। Things who can move, grow and breathe and learn living things are those who cannot breathe, grow and move. नहीं, शॉर्टकट का जमाना नहीं है। तुम्हें सेलुलर स्ट्रक्चर ये पेज नंबर 108 में जो दिया है वही चीज को बोलना है। तुम एक लाइन में पेज नंबर शुरुआती जो है उससे बोल रहे हो जी, नहीं पेज नंबर 103 का हेल्प लेके बोल रहे हो, वह नहीं करना है। आप जो डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो डिफरेंस है उसको लेके बोलना है। ओके तो मैं बोलूं? हाँ बोलो, तुमको तो कब ना बोला गया। लिविंग थिंग्स, living organisms are made up of cells. Non-living things lack cellular structure. They grow in height, weight, size, or volume. No growth occurs. Food is needed किताब for सामने energy रखोगे? and किताब सामने रखना है। सामने तो रखा हूँ सर। कहाँ दिखा रहे हो तुम? देखिए सामने रखा। देखिए चलो तो मैं बोलो। सामने ही रखा हूँ। हाँ ठीक है बोलो, मिल नहीं रहा है तुम्हारा पिक्चर। सर मैं बोलो। वही तो बोला सर। living things such both have living things breathe and aspire to obtain energy. They do not breathe or aspire or so response to various stimula so no response. Waste or unwanted materials are extracted from the body. Extraction does not occur in them. Give birth to more of their kind. Do not reproduce. जयंत कुमार हो गया। तुम्हें जवाब देना है, बी रेडी, तैयार हो जाओ। हो गया। जयंत कुमार Yes, sir. बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? सारे बच्चे कॉपी में लिख के दिखाओ जल्दी से अभी। और कल का पोर्शन पता है, चैप्टर 4 कल का क्या पोर्शन है? कल जो एग्जाम होगी बोलो। Yes, sir. तो बोलो डिफरेंस। सर बोल रहे हैं। हाँ Living organism made up of cells. Non-living organism has no cells. गलत बोल रहा है ये। The living beings grow up and the non-living beings are not grow up. The living beings make their own food and non-living things do not make their own food. सर कितना बताना है? 9 पॉइंट्स। सर 9 बताना है। हाँ यस सर बताते हैं। Living organisms move from one place to another, while non-living organisms not move from one place to another. नहीं आ रहा है? सर इतना ही याद, सर इतना ही याद है। और किसी को बोलना है? अवानी चित्रा, अंकिता घोष बोलो। Organisms are made up of cells. Non-living things non-living things lack circular structure. Living things, they grow in height, weight, size, or volume. Non-living things do not grow. Living things
Food is needed for energy and performing life activities. Non-living things, they do not require any food. Living thing breathe and res- respire to obtain energy. Non-living thing, they do not breathe or respire. Living thing, they are able to move their body parts or body as a whole. Non-living thing, they cannot move unless some external force is applied. Living things show response to various stim- सर ये याद नहीं है living thing living organisms have a definite lifespan. Non-living thing no definite lifespan. हो गया? हो गया? Yes sir. Yes sir. चलो नेक्स्ट। अवानी चित्रा सुन रही है? अर्जा, हर्षराज तुम बोलो। हर्षराज, हर्षराज, शिवम कुमार, अयोध्या पांडे, सर मैं अयोध्या पांडे, सर मैं भी लिख रही हूँ। कौन? लिख अंकिता घोष, अभिज्ञान सिन्हा, अर्जा तुम अनम्यूट क्यों नहीं हो रही है? चलो जी, तो आपने डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कॉपी में लिखोगे सारे बच्चे। ऋतिक राज लिख लिया? पृथ्वी संगम, Yes. लिख ली? Yes sir. No sir लिख रही हूँ. लिखो। मैं भी लिख हेलो क्या हुआ? कुछ नहीं तो फिर क्या बोला? अर्जा अनम्यूट हो जाओ जल्दी से। और अवानी चित्रा, अवानी चित्रा बताओ, डिफरेंस याद है? अवानी चित्रा सुन रही है? Yes sir. हैं? Yes sir. Yes sir. तो मैंने लिख लिया। बताओ डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Living things. बोलो। Living things are made up of cells.
non-living things. बुक सामने रखो, Non-living things lack in बुक सामने रखो, जो Book, कॉपी sir. लिखी है वो दिखाओ, कॉपी डिस्प्ले करो। सर अभी नहीं लिखी है। हैं, बोलो। सर अभी नहीं लिखी है। सर अभी नहीं लिखा है। तुमको प्रीफेक्ट बना दिया गया है, मालूम है? हैं? नो सर, मालूम है? नो हैं? सर, नो सर। तुमको नहीं बनना है? भवानी सर मुझे चित्रा नहीं पता। है? सर मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैंने प्रीफेक्ट बना दिया है 6B का, तो तुम्हें तो तुम उसको डिजर्व करना, तुम्हें फोन कर सकता है स्कूल से, समझ रहे हो? इसलिए इन्फॉर्म कर दिया गया। बॉयज में ऋतिक राज है और गर्ल्स में तुम हो, भवानी चित्रा, रोल नंबर 27। ओके, आर यू एग्री? ओके सर, यस सर, जोर से बोलो। यस सर। तो क्या पढ़ी है अभी तक? कुछ तैयारी कर ली? कौन सा टेस्ट में आ रहा है एग्जाम में? ऑनलाइन जो टेस्ट होगा कल, उसमें कौन सा पोर्शन आ रहा है? सर चैप्टर 4। उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर ली? यस सर। चलो सब्लिमेशन को डिफाइन करो, तो व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? बोलो, पढ़ती नहीं है जी, हैं? इसीलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि तुम ढंग से पढ़ो, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करो। आप पढ़ेंगे आज से, क्योंकि प्रिंसिपल सर के पास भी जाना पड़ेगा आपको, और नहीं आंसर दे पाओगे तो समझ लो क्या होगा। समझ रही है? कुछ समझ रही है? यस सर। तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए है, वह दिखाओ, कॉपी दिखाओ। तो पहले क्या सब बनाई है कॉपी में? कॉपी दिखाओ, क्या सब की है, कितना चैप्टर तक बनाई है? क्लास करती है ना जी? बोलो। Yes. अंधेरा हो गया जी। तो ये डिफरेंस नोट कर ली? कॉपी दिखाओ ना जी, कॉपी दिखाओ। कॉपी अपना दिखाओ। सर मेरा कंप्लीट हो गया। तुम्हारा कंप्लीट हो गया। आकाश राज, चलो रीडिंग दो, तो रीडिंग दो। सनिका श्री। आकाश राज, यस सर। बोलो। अद्या पांडे, आकाश राज, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? टाइम वेस्टेज कर रहे हो। Why are you? टाइम वेस्ट कर दिया। पृथ्वी संगम तुम लिख ली? पृथ्वी संगम सर 6
सर 6th पर हूँ। जल्दी लिखो, 6वीं पर हो अभी, जल्दी करो। उज्जवल कुमार लिख लिया? सर मेरा हो गया। यस सर। तो उसको पढ़ो, रीडिंग दो। A living thing growth over time. A need food, water, air, and sunlight. Example tree. हाँ बोलते जाओ। Non-living thing. A non-living thing do not grow. It also do not need food, water, air, or sunlight. Example rock. बोलते जाओ। बस 2 ही पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, उसमें 2 ही पॉइंट्स तुमको आ रहा है? ये 2 पॉइंट लिखने से हो जाएगा? ये 9 पॉइंट्स लिखना है। ये कल मैंने टास्क दे दिया था होमवर्क के रूप में। सर अनिका श्री। हाँ बोलो अनिका श्री, बोलो। Living organisms made up of cells. They grow in height, weight, or volume. Food is needed for energy and performing live activities. Living things breathe and respire to obtain energy. They are able to move their body parts or body as a whole. Show response to various stimuli. Give birth to more of their kind. Living organisms have a definite lifespan. Non-living डिफिनिट things, बोलते definite जाओ। lifespan. Non-living thing. Non-living lacks cellular structure. No growth occurs. They do not require any nutrition. They do not respire or breathe. They cannot move unless some external force is applied. Show no response. Do not reproduce. No definite lifespan. Completed. सर मेरा हो गया पृथ्वी संगम। बोलो, रीडिंग सर दो। मेरा हो गया। हाँ तो बोलो पृथ्वी संगम। लिविंग थिंग्स फर्स्ट। कॉपी दिखाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉपी डिस्प्ले करो। हाँ बोलो। Living things first. Living organisms are made up of cells. Non-living things first. Non-living things lack cellular structure. Living things first. Second, they grow in height, weight, size, or volume. Non-living things. Second, no growth occurs. Living thing. Third, food is needed for energy and performing life activities. Non-living thing. Third, they do not require any nutrition. Living thing. Fourth, living things breathe and respire to obtain energy. Non-living thing. Fourth, they do not breathe or respire. Living thing. Fifth, they are able to move their body parts or body as a whole. Non-living thing. Fifth, they cannot move unless some external force is applied. Living thing. Sixth, show response to various stimuli. Non-living thing. Sixth, show no response. Living thing. Seventh, give birth to more of their kind. Non-living thing. Seventh, do not respond. और Living thing. Eighth, waste or unwanted materials are excreted from the body. Non-living thing. Eighth, excretion does not occur in them. Living thing. Ninth, living organisms have a definite lifespan. Non-living thing. Ninth, do not no definite lifespan. और कोई? आराध्या पांडे बोलो तुम।
आराध्या पांडे Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Difference between living things and non-living things बोलो. Living things. Growth. Living organisms has height, weight, size, or volume. Non-living things does not grow. Cellular structure. Living things are made up of cells. Non-living thing. Yes. Non-living things lack cellular structure. Movement. Living things can move their body parts or body as a whole. Non-living things cannot move their cannot move. They occur external force to move. Reproduction. They produce more like their kind. Non-living things. They do not reproduce. Nutrition. Living things obtain energy for performing life activities. Non-living things. Non-living things do not occur nutrition. Breath. Living things. They obtain energy and respire. Non-living things do not breath or respire. Response. They respond to the stimuli. Non-living things. They do not respond. हो गया. ऋतिक राज कंप्लीट कर लिया. Yes, sir. तो बोला का अभी तक. चलो एक्सप्लेन Sir, करो. अभी कॉपी complete दिखाओ. हुआ है. एक्सप्लेन करो. कॉपी दिखाओ. तो मैं भी दिखाऊं. ऋतिक राज. Living beings. Living beings have cells. Non-living beings do not have cells. Living beings can grow. Non-living beings cannot grow. Living beings need food and water. Non-living beings do not need food and water. Living things can respire. Non-living beings cannot respire. Living things move from one place to another. Non-living things cannot move one place to another. Living beings can respond to stimuli such as touch, light, etc. Non-living things cannot move. Non-living beings cannot respond to stimuli such as light, touch, etc. Living beings can respond. Non-living beings cannot respond. Living beings can excrete urea in an excretory waste of animals and it's removed as urine. Non-living beings cannot excrete. Living beings have a definite lifespan. Non-living things do not have a definite lifespan. हो गया. Yes, कंप्लीटेड. sir. चलो Yes, और sir. किसी को बोलना है. हैंड रेज करो जिसको बोलना है. जिस किसी को भी आंसर देना है उसको हैंड रेज करना होगा. एनीवन? कोई नहीं है. जानवी, हर्षराज, सर मेरे को बोलो. अर्पिया बोलो. वीडियो ऑन करो. अब बोलो. यस सर एक मिनट यस सर बोलो. non-living things lack secular structure. Non-living things no growth occurs. They do not require any nutrients. They do not respire. They cannot more unless some external force is applied. Show no response. Do not reproduce. No definite lifespan. Living things lack secular structure, have growth, they require nutrients, they respire, they respond, they produce, there is lifespan in living things, and they can more unless some external force is applied. हो गया. Yes कंप्लीटेड. sir.
चलो अभिज्ञान Yes, सिन्हा तुमने sir. बता दिया। अभिज्ञान सिन्हा सर के लास्ट लिख लीजिए सर, लास्ट लिख रहा हूँ सर, उसके बाद खत्म होकर आपको बता दूंगा। टाइम ओवर होने जा रहा है, ये सर मालूम हो है ना? गया, हो गया। है और किसी को, यस सर। और कोई बताएगा? चलो या आंसर दो। हरिओम कुमार, सर मेरा हो गया। किसका नाम बोलो? सर आराध्या पांडे। तो दो आंसर दो, वीडियो ऑन करो। सर वो पहले भी बोल चुकी है। हाँ हाँ बट मेरा कंप्लीट नहीं था उस टाइम। चलो सर मेरा ठीक है बट उस फिर। टाइम पे कंप्लीट नहीं था। हाँ तो बोलो फिर से, तो तभी क्यों बोल दी? फिर से बोलो तब। Growth. Living things. Living organisms has height, weight, size or volume. Non-living things do not grow. Cellular structure. Living things. Living things are made up of cells. Non-living things. Non-living things lack cellular structure. Movement. Living things. Living things can move their body parts or body as a whole. कॉपी Non-living दिखाओ। things. Non-living things cannot move. Living things. Living things can move their body as a whole. Non-living things. Non-living things cannot move. They occur external force it to move. Reproduction. They reproduce more like their kind. Living thing. Non-living thing. They do not reproduce. Nutrition. Living things. Living things obtain energy for performing life activities. Non-living things. Non-living things do not occur nutrition. Breath. Living things. They obtain energy and respire. Non-living things. Non-living things do not breathe or respire. Response. The living things. They respond to the stimuli. Non-living things. Non-living things do not respond. Lifespan. Living things. Living things has definite lifespan. Non-living things. Non-living things do not have a lifespan. Excretion. Living things excrete the waste or unwanted material. Non-living things. Non-living things do not occur excretion. चलो जी, अभिज्ञान सिन्हा आप कंप्लीट कर लिया होगा। अभिज्ञान यस सिन्हा सर। हैं? तो चलो आंसर दो। यस सर, तभी दिखा। बोलो जल्दी बोलो। अभिज्ञान सिन्हा, आर यू लिसनिंग? जोर से बोलो। क्या हुआ जी, तुम्हारा बहुत डिले चलता है। हैं? और उसका वीडियो ऑफ है। तो बोले उसका आवाज वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करो। अब ये इंटर किया, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ बोलो अभिज्ञान सिन्हा। तुम नहीं बोलेगा, दूसरा कोई और? एनीवन? दूसरा सर कोई अपनी चित्र। है?
चलो बोलो तुम ही सर वो बोलो। क्लास में नहीं है। हट गया है वो, नेटवर्क होगा कुछ। चलो आगे बोलो जी। सर हाँ चित्र हाँ बोलो, अग्नि अवानी चित्रा बोलो। living things living कॉपी दिखा के organisms बोलोगे। are made up of cells non-living कॉपी दिखाओ। okay sir living things are made up of cells non-living things lack in cellular structure living things food is needed for energy and performing life activities non-living things no nutrition is needed living things they respire and breathe to obtain energy non-living things they do not respire or breathe living things they can move their body parts or a body as a whole non-living things do not they cannot move some external forces applied living things they give birth of their kind non-living things they do not reproduce living things uh, show response to various stimuli non-living things show no response a definite lifespan they live a definite lifespan living things no definite lifespan living ओके things they grow in height weight volume and size non-living things they no growth is occurred living things unwanted and waste material are excreted from body non-living things do not occur excretion ठीक है, तो ये चीज आपको कल याद करके लाना है ना। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग सारे कॉपी में भी लिख के लाना है। और अवानी चित्रा और वो ऋतिक राज, ये 6B का प्रीफेक्ट है। आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है क्लास में भी, जो रिकॉर्डिंग भी हो चुका है। और आपका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर ये भेज दिया गया है। इसलिए बी अलर्ट और तैयारी करके रहो, ठीक है? ओके, क्लियर? yes sir तो आज का यहीं तक है ना। गुड डे, चलो बंद करते हैं। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।